Hello students, welcome back to our channel Gyan Manji Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. Students, in our last lecture we had started our 5th unit from your NCERT textbook Honeydew. Okay, so we had started the Samit within and the little bit portion 2 pages approx we had completed. So from this we are going to start the last paragraph. From glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. So here, who's talking? About whom we are talking? HPS Ahluwalia, who was the member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. So he's explaining his feelings and what happened when he all climbed up the mountain. So glimpsing a peak in the distance. The sparkle, the sparkle was there in the distance. I get transported to another world. Means that feeling was there that he is not living in here, but he is in the another world. ऐसा अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, मतलब कि जो ब्यूटी ऑफ नेचर था तो उसे लगा कि वो कोई एक अलग सी दुनिया में ही चला गया है. आई एक्सपीरियंस a change within myself which can only be called mystical. Means that kind of change you could see in uh, himself only, and that is called mystical. Means spiritual changes was there by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. So, वो स्पिरिचुअल फीलिंग क्यों कर रहा था? बाय इट्स ब्यूटी ऑफ द नेचर. एवरेस्ट, इफ यू हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, so you can feel that by seeing the view, the weather, we feel like a heaven. So by its beauty, aloofness, that aloofness means that distant was there. It was totally distant. Mind, ruggedness means it was totally rugged means roughly. It was totally irregular and rough. Means when he was just climbing the mountains, and the difficulties encountered on the way, a peak draws me to it, as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. तो वो कौन सी चीज़ से इतना इम्प्रेस हो गए थे? वहाँ पे क्या वेदर था, क्या उसका एटमोसफियर था, दैट ही हैज़ डिस्क्राइब हाउ द वे वॉज. इट वॉज टोटली रफ, aloofness was there, but beauty was there. So beauty, with all these obstacles, it was attracted to this Ahluwalia. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe? Why do you help your neighbor? Why do you want to be good acts? There is no final answer possible. तो यहाँ पे लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन. तो अभी पीछे देखते हुए पता चलता है कि मैंने फुल्ली एक्सप्लेन तो नहीं किया कि वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट को क्यों चढ़ा. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन. ये ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर है जैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन के आंसर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्यों आप ब्रीद करते हो? वाई डू यू हेल्प योर नेबर? Why do you want to do good acts? So there is no any final answer possible that why you climb Everest. So students, यहाँ पे आप लोग ये पूरा व्यू भी देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है. The view is very beautiful, right? So here he is climbing the
Everest with the help of stick. So the mountain was totally attracted, right? So just snow is there. We can see how the ices are just freezed. So that is also possible that sometimes people are climbing the mountains, this kind of Everest. So that is also possible that a person will be freezed because the temperature will be totally lowest in minus degree. So that's why this is the possibilities. But with the help of willpower, they just did it. So here you can see how it is. So you can do Google with the help of your phone that which kind of atmosphere will be there in Mount Everest. So, and then there is the fact that Everest is not just a physical climb. तो यहाँ पे चढ़ना Everest, to climb the Everest, that is not just physical climb. तो क्या है ये? The man who has been to the mountain top becomes conscious in a spatial manner of his own smallness in this large universe. तो यहाँ पे इस तरह की बात की गई है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना दैट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल क्लाइंब. एंड देन देर इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट है कि एवरेस्ट को चढ़ना वो सिर्फ फिजिकल क्लाइंब नहीं है. द मैन हु हैज़ बिन टू द माउंटेन टॉप, कि जो माउंटेन के टॉप पे है, दैट बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. ये पूरे यूनिवर्स में यहाँ पे खड़े रहना, ये सब कुछ देखना, ब्यूटी को एंजॉय करना, कॉन्शियस रहना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. So here Ahluwalia, he had talked about the feelings, that what did he feel when he just climbed up that mountain, the Everest. The physical conquest of a mountain, that is only one part of the achievement. वो अचीवमेंट का जस्ट एक पार्ट ही है, बट देर इज मोर टू इट दैन दैट. पर उससे भी ज़्यादा कुछ है. इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. देर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबाउ वंस सराउंडिंग. तो आसपास रहना, ब्यूटी के आसपास रहना, उससे सेटिस्फैक्ट होना. सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग. Means to be attracted by the beauty, to surrounded by the beauty, that is also the another thing. It is the eternal love for adventure in man. तो लोगों में ये eternal love है, मतलब कि अंदर से जो ऐसा वाला कि बहुत ही नेचर के लिए इतना ज़्यादा लव होना, मतलब कि बहुत उसे नेचर की कंपनी बहुत ही पसंद होती है. दैट इज़ कॉल्ड इटर्नल लव, कि जो हमेशा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता. दैट इज़ इटर्नल लव, मतलब कि हमेशा ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, माउंटेन्स है, वो एक हमारे लिए अट्रैक्शन रहा है. और उसके लिए जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. तो ये साहस करना, साहस करके ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ना, दैट इज़ वेरी एडवेंचरस मूवमेंट फॉर दैम, ऑफ कोर्स.
द एक्सपीरियंस इज नॉट मैरिली फिजिकल, वो धीरे धीरे सिर्फ फिजिकल ही एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो एक इमोशनल भी एक्सपीरियंस है कि कैसे वो सारे ग्रुप ने हाउ डिड दे क्लाइम्ड अप दैट माउंट एवरेस्ट. द फीलिंग वॉज देयर, इट वॉज सुपर. हमारे धर्म में भी ऐसा है. इफ़ यू आर बिलीविंग मीन्स अगर मंदिर या फिर मस्जिद में भगवान को प्रे करते हो, उसके मंदिर में जाते हो, तो क्या हमें कुछ बहुत ऐसा अच्छा फील होता है. मस्जिद में जाते हो, प्रेयर करते हो, या फिर कुरान पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, तो भगवत गीता पढ़ते वक्त हमें क्या बहुत ऐसा हेवनली फील होता है. मतलब कि दैट वी आर टॉकिंग विद गॉड एंड समटाइम्स वी फील लाइक गॉड इज गिविंग अस आंसर. सो दैट इज अनदर फीलिंग. वो एक फिजिकल नहीं, एक इमोशनल फीलिंग है. तो यहाँ पर भी जो नेचर के साथ वाली जो फीलिंग है दैट इज टोटली डिफरेंट एंड इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल फीलिंग्स. Consider a typical climb toward the summit of the last heights. You are sharing a rope with another climber. You form in. He cuts the steps in the hard ice because surrounded it was surrounded by ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. So, here consider a typical climb towards the summit on the last heights. You are sharing a rope means वो लोग क्या कर रहे थे, जो a kind of tracking, so with the help of rope they were doing that thing. So they were just sharing a rope with another climber, मतलब कि उसके साथ जो चढ़ने वाले, so that is called climber, तो उसके साथ वो अपना रोप भी शेयर करते थे. You firm in means make yourself firm. He cuts the steps in the hard ice मीन्स जो एकदम सा जम गया था आइस, उसे वो क्या कर रहे थे, दे वर कटिंग द स्टेप्स इन द हार्ड आइस. देन ही बलेज मीन्स फिक्सेस अ रोप, वो लोग रोप को फिक्स भी कर रहे थे. एंड ईच योर वे अप, ताकि विद द हेल्प ऑफ दैट रोप आप लोग आगे बढ़ सकते, मतलब कि आगे बढ़ सके, चढ़ सके. उसके लिए वो क्या यूज़ करते थे, रोप यूज़ करते थे और आइस में ऐसा फिक्स करके वो लोग आगे बढ़ रहे थे. द क्लाइंब इज ग्रीन. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. फेमस क्लाइंबर्स, बहुत ऐसे फेमस क्लाइंबर्स भी थे. दे हैव लेफ्ट देयर रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड्स भी पीछे रह गए थे. ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, मतलब कि उसे भी हेल्प की ज़रूरत थी, वो भी दूसरों को हेल्प करते थे, तो उसके जो पहले के रिकॉर्ड थे वो पीछे छोड़कर वो आगे आ रहे थे. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. वो उसे हाउ दे नीडेड, उसे दूसरों की हेल्प क्यों ली, कैसे ली, तो वो भी वो रिकॉर्ड कर रहे थे. मतलब कि हाउ दे नीड, मतलब कि अच्छे अच्छे लोगों को भी यहाँ पे दूसरों की ज़रूरत होती थी. एज दे माइट हैव गिवन अप, अगर वो दूसरों की हेल्प नहीं लेते तो वो क्या करते, गिवन अप कर देते. ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट. अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो हाईएस्ट पीक पर जाने लगे थे वैसे वैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने शुरू हो गई थी. वाई, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल एकदम सा कम होता है. ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. खुद को ही ऐसे बद्दुआ देते थे कि ये तूने क्या किया, लाइक दैट. You wonder why you ever undertook the action.
देर आर मोमेंट्स वैन यू फील लाइक गोइंग बैक। तो कई कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा फील होता है कि चलो पीछे हट जाते थे, बिकॉज ब्रीदिंग इज मस्ट। जीने के लिए ब्रीदिंग तो चाहिए ही चाहिए, पर जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते थे वैसे वैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो खुद पर गुस्सा आता था सबको कि ऐसा खुद की जान को खतरे में डाल के ऐसा क्या किया। ऐसा भी हो जाता था कि चलो फिर पीछे चल जाते थे, तो ऐसा भी उसे फील होता था सबको। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। पर क्या करते थे वो, स्नैप आउट मतलब कि वो जो मूड था उसे स्विंग कर देते थे, मतलब कि नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अब थोड़ा ही बाकी है। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। खुद खुद में कुछ तो ऐसा है कि हम गिव अप कभी नहीं करेंगे। गिव अप द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू। चलो आगे बढ़ो, आपके कंपेनियन आपके साथ है। सो लाइक दैट, जस्ट अनदर 50 फीट, अभी भी 50 फीट बाकी है, और 100, मे बी यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड। कितने टाइम से चढ़ रहे थे, सो इजंट देयर एनी एंड, कभी एंड नहीं होने वाला है, या फिर पूरी लाइफ वैसा चढ़ते ही रहना है। दे वर फीलिंग लाइक दैट, इजंट देयर एनी एंड। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप अपने कंपेनियन के सामने देखते हो, वो आपके सामने देखते हैं। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन everyone's mind, this kind of curves they were giving to themselves only, each other, एक दूसरे को नहीं पर खुद से ऐसे बात करते थे। you draw inspiration from each other, and then without first being aware of it you are at the summit। तो without first being aware of it, तो पहले ही है, वो जाने बिना आप कहाँ पे हो, यू आर एट द समिट। आप पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पीक है एवरेस्ट, उसकी टोच पे अभी है आप। सो जस्ट we have to assume that what kind of feelings will be there in their mind by reaching at the top of the mountain। वो कैसा कैसा फील करते हैं, तो वो तो सिर्फ हमें अज्यूम करना है by reading this all the things। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम हमारा आज का लेक्चर रखेंगे। जो हमारे कल का लेक्चर था उसमें मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर्स थोड़े बहुत दिए थे। ओके, सो आई विल send you that, I will send you the answers of it।